Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In today's video, let me give a brief about this video and from now onwards we are going to start a series where we will complete all lectures of public administration, all units of public administration for totally free of cost and with my handwritten notes with a short and crisp notes so that you can revise it multiple times and it will be very easy for you to do revision. So up till now we have in our videos we have discussed the PYQs, how to make short notes, and what are the trends in the PYQs and all. But from this video onwards we are going to start a series where I'll complete all units of public administration for the free of cost on the YouTube channel. But for that you have to support this series so that I can make the more videos, so that I can get a good feedback, so that I can continue it for you all guys. So let us start today's video. हम ना आज की वीडियो को यूनिट 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन, नेचर, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, फिर एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे, जहाँ पर हम हायरार्की, अकाउंटेबिलिटी and scholar chain, all that principle we'll read in this video. And I will make it shorter. मतलब मैं एक माइंड मैप्स की तरह नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी जिसमें आपको रिवाइज करने के लिए इजी हो जाएगा. एंड देन आई विल ऑल्सो गिव वैल्यू एडिशन नोट्स फॉर इट. ट्रस्ट मी गाइज, no one will give this much on that YouTube. Like when I was preparing for this, so I found it very difficult. Like there was no there was no such content which provide holistically at one place, so I have to do a lot more. So I have to get things from various sources. So then I prepared my own notes. So now on this channel I'm going to give the whole whatever I have prepared to you all guys. But the one condition for that is, if you support this series I will make it more videos. Like I will come up with new videos. So the one thing is you have to do is you have to share it with all people who are preparing for that, so that they can also get benefited from this. Okay, so without getting further delay, let us just start. So unit 1 mein, let us start with the meaning of public administration. See guys, I'm not going to give you that conceptual lecture here. Matlab what is what. I'm just going to have a very important things here. Whatever have been written here, it's not okay you just read and leave it. No, you have to remember it also, because these are all PYQs. Once in a time these have got repeated. So मैंने इसे ऐसे ही यहाँ पर नहीं लिख दिया है, ये PYQs में रिपीट हुए हैं, तो दिस बिकम्स योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट. लाइक यू हैव टू रिवाइज इट एंड यू हैव टू रिमेंबर इट ऑल्सो, बिकॉज यू विल गेट इट इन स्टेटमेंट फॉर्मेट एंड यू विल ऑल्सो गेट इन फैक्चुअल फॉर्मेट. सो जो भी यहाँ पर नोट्स दिखाई दे रहे हैं, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं. इसे देखकर फिर आपको इसे रिवाइज करना है. सो दिस विल हेल्पफुल फॉर यू. चलिए, सो हमारे पास है मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से निकला है, जिसके मीनिंग होते हैं टू सर्व, टू मैनेज. चीज़ों को, लाइक टू सर्व यानी हम किसी को सर्विस दे रहे हैं, टू मैनेज या फिर हम कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर बताया गया है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम देखेंगे ऑथर्स ने किस तरह डिफ़ाइन किया है, उसके मीनिंग किस तरह बताए हैं, तो हमारे पास यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑथर्स हो जाते हैं, जो कि PYQs में भी इनका पूछा गया है डिफिनेशन, मीनिंग. सो यहाँ पर मैंने लिख दिया है. लेट अस सी के जो E.E. ग्लैडन है, उन्होंने एक बात बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टू केयर, टू लुक आफ्टर पीपल, बिकॉज ही इज सेइंग के to care or to look after people. It's kind of government administration or public administration, he is saying. Felix A. Negro says that use of men and material to accomplish the purpose. See, this men and material wala got too many time repeated, so you have to mark it as a star one, so that it will helpful for you. So फेलिक्स एंड निग्रो का हमने जो मीनिंग देख लिया है वो मेन एंड मटेरियल को अकम्प्लिश करके
पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। LD वाइट LD वाइट ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी पर्सन्स। यानी ही इज सेइंग दैट वॉट एवर वी आर डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द पीपल, सो दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन. Then Luther Galica meaning of administration has come that administration has to do with getting things done. ये this is also got repeated too many times. यानी you can mark it as a star because these are very important. जो भी important है मैंने उसको कंबाइन कर लिया है यहाँ पर. सो देर इज़ नो नीड टू सर्च फॉर अदर थिंग्स, यू कैन रिवाइज दिस. एंड डिफिनीशंस ना, हमने मीनिंग तो देख लिया एडमिनिस्ट्रेशन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं. डिफिनीशन भी हमें बहुत सारे ऑथर्स ने यहाँ पर दिया है, जिसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट को मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, जिसे हम देख सकते हैं. विड्रो विल्सन ने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ डिटेल एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ. Obviously whosoever the students of public administration, वो तो they'll definitely remember this definition of public administration, like detailed and systematic execution of law. And he's related public administration with the business field also. Okay, लूथर गलिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. यानी लूथर गलिक ने कहा है कि जो साइंस है उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से इन्होंने रिलेट किया है. जो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से डिफरेंट नहीं है, यानी दे आर बोथ टुगेदर उसने कहा है. और कंसर्न विद लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी ब्रांच, बस इन्होंने लेजिस्लेटिव और जुडिशरी ब्रांच को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एक्सक्यूज़ मी यहाँ पर रिलेट किया है. फिर हमारे पास आते हैं नेक्स्ट ऑथर विलॉग बाई ने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को 2 सेंस में कहा है इन्होंने. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, इसमें बहुत बार PYQs पूछे गए हैं. अगर आप लोग ने इस पर कमेंट किया कि मैं इसके PYQs भी बनाऊँ यूनिट 1 के, सो इफ़ यू गाइस वांट मी टू डू दैट, सो कमेंट डाउन इन द सेक्शन, सो आई विल मेक वीडियो फॉर सेपरेट वीडियो फॉर PYQ सेग्रीगेशन ऑफ यूनिट. मतलब यूनिट वाइज मैं PYQs के वीडियोज़ बनाऊँगी. इफ़ यू गाइस वांट इट, सो वोट इट इन द कमेंट सेक्शन. देन विलॉग भाई ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को 2 सेंस में डिवाइड किया है, दैट इज़ ब्रॉड एंड नैरो. ब्रॉड में ही सेज दैट गवर्नमेंट अफेयर्स वॉट एवर टेक्निकल मैनुअल जो भी होंगे, टेक्निकल हो गए या मैनुअल हो गया, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा ब्रॉड सेंस में. जब नैरो सेंस हम देखेंगे तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच ओनली, जस्ट इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन ही आएगा, नॉट दैट मैनुअल लेजिस्लेटिव जुडिशरी ब्रांच वाला नहीं आएगा. ठीक है, सो ये हमने देख लिया है. उसके बाद ड्वाइट वर्ल्डो ने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंस ऑफ मैनेजमेंट. यानी इन्होंने इसको आर्ट और साइंस से भी रिलेट किया है. ये आर्ट कैसे है और ये साइंस कैसे है, इसको इसने रिलेट किया है. जैसे साइंस को हम देखते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, और आर्ट कैसे है कि इसका पूरा एक स्पेशलाइजेशन या स्किल्स जो होती हैं वो आर्ट होती है. ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं जेम्स डब्ल्यू फेस्लर ने बताया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ पॉलिसी एग्जीक्यूशन एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि पॉलिसी एग्जीक्यूशन और पॉलिसी फॉर्मुलेशन किसने कहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, तो जेम्स डब्ल्यू फेस्लर ने कहा है. ठीक है, ये थे जो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ पर देख लिए हैं. उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हम बहुत दफ़ा लाइक एवरी टाइम वी लिसन के एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये दीज आर द रिलेटेड टर्म्स बट दे आर नॉट सेम. सो हम यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं कि इसका होता क्या है डिफरेंस. सो ये जो डिफरेंस है कि एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट के, इसको विलियम शेल्जे ने इसको क्या है डिफ्रेंशिएट किया था कि एक्चुअली में ये 3 टर्म्स एक दूसरे से किस तरह डिफ्रेंशिएट होते हैं. तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होता है वो ऑब्जेक्टिव को ले डाउन करता है, लाइक वॉट एवर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी लेड डाउन बाय द पब्लिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन. एंड द ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इट विल डू, इट विल कंबाइन द ऑल रिसोर्सेज, लाइक इट विल हैव अ प्लान, it will combine technical manual resources. Organization will do this. And management, what it will do, it will lead, it will guide, and it will supervise the functions. So these are the differentiation between these 3 terms, so you have to remember this. Okay,
Now let's see the nature of public administration. Matlab, what is the nature of public administration, how it works actually. So we have two views of the nature of public administration, that is one is the integral view, like we can see the integral view, and another is managerial view. Integral views may whatever that like all management activity, technical activity and external activities, whatever it will be, no, so it will be handled by the administration. Its administration will not only deal with execution here, like it will manage, it will, you know, have all kind of activity under it. So that is called integral view of administration, and this work in the top down manner. Okay, this works in a top down manner. And who advocated this integral view of administration, nature of administration, is like LD White, DeMock, Wilson, Marshall and F Negro. These are the people who advocated integral view of public administration. So you have to remember these names, because too many times this got asked in the PYQs. If you open the PYQs, if you see the papers, multiple of times they have asked this, who propose the integral view of public administration. So you should must remember this integral view of public administration propounder. Okay, uske baad we have a managerial view of public administration. Managerial means it will just only deal with the managerial activities, not technical, non-manual activities. So these were proposed by Simon, Smithberg, Luther Gelig. So these three people advocated this managerial view of administration. So you have to remember these names also. That's why I have written this from different colors, so that you will remember it, because these are important. Whatever the data have been written from the green pen, it is important. You have to remember it. Okay, so as we have okay, अब लूथर गलिक ने definition दिया है, administration has to do with getting things done. So like that you have to remember the administrations, you have to remember the definitions also, like you have to revise it. Like अब हमने देखा है कि यहाँ पर LD White ने definitions क्या दिया है public administration का, जो भी हमने ऊपर देखा है. Now comment it down below so that you can see how much you are retaining while watching the video. You just not have to watch it blindly, but you have to watch it actively. Okay, now we'll see what is the scope of public administration, like what can administration do. So scope of public administration, the most famous thing is like post carb. And now tell me, who gave this post carb? Already have written here the name, but still I want you to comment on it below, who gave that post carb view. The post carb means we have that planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting. So these are the things administration do. It will plan, it will organize, it will staff, and it will direct, it will coordinate, it will report, and it will budget its programs. Okay, Lewis and Merriam, she said, I don't know what she or he, but this author said that administration is like two blade. One is of knowledge, and two blade like a pair of scissor. यानी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को सीजर्स के दो ब्लेड की पेयर्स की से कंपेयर किया है. वन ब्लेड विल बी ऑफ नॉलेज, मतलब व्हाट टू डू, एंड वन ब्लेड विल बी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक हाउ टू डू. ओके, नाउ एमडी डीमॉक इन्होंने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप होता है व्हाट एंड हाउ, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन विल डू एक्टिविटीज अपॉन व्हाट एंड हाउ. Okay, so now we will see the approaches to public administration. See guys, I have very crisp and short notes. You don't need to remember that you don't need to remember that long text paras again and again. You can just write down the factual things like that once you have the conceptual clarity. Because of that, I'm giving conceptual clarity also, and I'm showing you the short notes. So this is how you can make the notes, and this is very important notes, and this is very comprehensive notes. And if I get your support, so I'll make bonus videos, like value addition videos on this also. Okay, so approaches to public administration is like
we have 4 types of administration: philosophical, legal, historical, and case studies. Philosophical may will have the normative things like what ought to be do. They'll prescribe the things what administration should do. It's not like what administration is doing, but it is what administration should do. So these were propounded by Plato's Republic, John Locke, and Thomas Hobbes, Leviathan. So yeah, these are the books where they have where they have followed the philosophical approach for the public administration. And the legal approach where we'll focus on the laws, how laws are working, how laws should be on the administration. That is given by Frank Goodnow. And these were followed in the USA, Germany, Europe. So these are the countries who follow the I'm really sorry, excuse me for that, who follow this approach. Okay, then we have historical approach, which was propounded by LD White. Like we'll see how administration has worked in the history and how it should work in the present and future. That is what we'll see in the historical approach. And case study method mein we will take a particular country or region and we'll see how administration is working there. Okay, now let us see the significance of administration. So significance mein, these are the most important, let me just write it down, most important authors and most repeated PYQs. This is also जो भी मैंने डेफिनेशन सिग्निफिकेंस के यहाँ पर लिखे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऑलरेडी PYQs में रिपीटेड हुए हैं. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर. ऐसे तो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु गिव डेफिनेशन सिग्निफिकेंस, देयर व्यूज ऑन सिग्निफिकेंस, बट आई हैव रोट which have been repeating in the PYQs since past year. So one is the WB Donham. ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ PYQ से. दिस हैज़ रिपीटेड इन मल्टीपल टाइम्स. लाइक इन द व्यू ऑफ सिग्निफिकेंस, ही इज सेइंग दैट इफ आवर civilization fails, it will be mainly because of administration. That much importance they are giving to administration. Like if the civilization failed directly, it is relating to the administration. That is how important administration is. And the Ramsay Moyer, he is saying that no revolution can change it and no upheaval can uproot it. Okay, so these are the famous and very unique kind of significance they are giving. That's why I have written here. These are the very important. Otherwise there are so many authors who have gave significance of public administration, but you cannot revise, you cannot remember all those, but you can remember this important one. Okay, and the Henry Fayol have said that administration process is universal, so it will be everywhere. Okay, Paul Pigger, he said that administration is to preserve status quo in the society. Okay, Emmy Demoka, this is also got repeated too many times. Okay, administration is now so vast area that philosophy of administration is a philosophy of life. It is directly relating that philosophy of administration is whole that of philosophy of life. So you can see how much importance they are giving to, how much significance they are giving to administration. Okay, then we have Ordway Ted ने कहा है कि administration is a moral act and administrator is a moral agent. This is also got so many times. This is our PYQ. Okay, and then Paul Appleby have said that no government can exist without administration. So this is a very important significance author views. You can write it down, you can jot it down, so that this will repeat in the PYQs. So if you want these notes, I can share it in the Telegram. You can join my Telegram, that is Rahakul Academy by Kulsum. You can join it on the Telegram and you'll get all the notes and notifications there. And if you want me to continue this series, just comment it down in below and share this video with all your friends who need it, who can get benefited from it. So I'm promising you that if you like this series now, I'm going to make this whole series free of cost on the YouTube with my own value addition notes, with my handwritten notes, and with short and crisp notes, so that you can revise it very easily. So I'll share how I cracked the JRF and how you can do it with making notes and all. So that is it for today. Do let me know your feedback in the comment section. Should I continue this series, or if I get good feedback, I'll surely proceed with it. So it is totally depend on you. If you want this, I'll continue this. Okay, thank you for watching. See you in the next video.